ಐಟಿ ಸಿಟಿಯ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಆರ್ಭಟ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏರ್ ಶೋ. ಈ ಏರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಐಟಿ ಸಿಟಿಯ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಆರ್ಭಟ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂದಿನಿಂದ. ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕಲರವಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐಟಿ ಸಿಟಿಯ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಆರ್ಭಟ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 15ನೇ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 2025ರ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ 14ರವರೆಗೆ ಏರ್ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಲಹಂಕದ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿದೆ. 14ರವರೆಗೆ ಈ ಏರ್ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ನ F-35 ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ Su-57 With that, as we take the program forward, we are deeply honored to have the august presence of the chief guest, Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji. So if I may humbly request the Honorable Raksha Mantri to please proceed towards the dais. I further request all our May I further please invite the Raksha Rajya Mantri, Shri Sanjay Seth. I also please invite the Deputy Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shivkumar. We also extend a warm welcome to the Chief of the Defence Staff, General Anil Chauhan, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM. Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh Kumar Tripathi, PVSM, AVSM, NN. Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, PVSM, AVSM. We further invite the Chief Secretary, Government of Karnataka, Dr. Shalini Rajneesh. We extend a warm welcome to the Defence Secretary, Shri Rajesh Kumar Singh, the Secretary, Defence Production, Shri Sanjeev Kumar, and the Vice Chief of the Air Staff, Air Marshal Sujit Pushpakar Dharkar, PVSM, UYSM, AVSM. Ladies and gentlemen, as the proceedings of the inaugural ceremony begin, we are deeply honored to have the august presence of the chief guest, the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji. We once again extend a warm welcome to all the dignitaries on the dais. And may I please humbly request all of you to take your seats. And now, ladies and gentlemen, may I please invite Shri Sanjeev Kumar, Secretary, Defence Production, to please deliver the welcome address. Ladies and gentlemen, good morning, namaskar. It's my privilege to welcome Honorable Raksha Mantri Ji on this momentous occasion of inauguration of 15th edition of our flagship air show, Aero India 2025. On behalf of Ministry of Defence, Aerospace and Defence Industry Fraternity, I extend sincere gratitude to Honorable Raksha Mantri Ji for accepting our request and gracing the occasion with his presence. I also welcome Honorable Deputy Chief Minister, State of Karnataka, our partner state for Aero India 2025, and would like to place on record our sincere thanks and appreciation for all the responsibilities shouldered by state administration and their other institutions. I am also privileged to welcome Honorable Raksha Rajya Mantri Ji and profusely thanks him for gracing this occasion. The gracious presence of the Honorable Defence Ministers, Deputy Defence Ministers, from 26 friendly countries and delegation led by senior officials from more than 90 countries from across the globe has bestowed prominence to this event. I, on behalf of Ministry of Defence, express our
very attractive. With the pavilions, just to give the information for the people watching, we've got at least about 59 CEOs from various countries participating, which is the biggest for this time. And at the same time, this speciality, the aircrafts participating from America as well and Russia as well. And we have our favorite Sukhoi as well, which we will be flying today and we'll be watching. Yeah, the fly past, we can see that we indeed need to be proud towards the display area. Ladies and gentlemen, what a thrilling beginning to today's proceedings. Can we have a huge round of applause? And can we hear it for the glory in the sky right here at the inaugural ceremony of Aero India 2025. With that, as we take the program forward, we're deeply honored to have the august presence of the chief guest, Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji. So if I may humbly request the Honorable Raksha Mantri to please proceed towards the dais. I further request all our esteemed dignitaries to please proceed towards the stage as well. May I further please invite the Raksha Raju Mantri, Shri Sanjay Seth. I also please invite the Deputy Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shivkumar. We also extend a warm welcome to the Chief of the Defence Staff, General Anil Chauhan, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM. Chief of the physical infrastructure, digital infrastructure, startup ecosystem, industrial support base, MSMEs, innovation जैसे क्षेत्रों में आज भारत एक लंबी छलांग लगा चुका है। यदि मैं स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो इसमें भी आज इनोवेशन की लहर तेजी के साथ चल पड़ी है। हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, इसमें हमारे प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो सके। साथियों, यहाँ पर मैं हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की भी बात करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारे पहले के DAPSUs और ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇರುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ 90 ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಸರಕು ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ನ F-35 ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ Su-57 ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ 4438 ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ಏರ್ ಶೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು. ಇಂದಿನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರವರೆಗೆ ಯಲಹಂಕದ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ 42,000 किया गया ज्वाइंट वेंचर इसका एक अच्छा उदाहरण है। आज हम सब जिस शहर में बेंगलुरु में उपस्थित हैं, यह शहर तो अपने आप में ही इनोवेशन का हब माना जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में यह शहर इतना रिच है कि इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए अब यह शहर एरोस्पेस के मामले में भी अपना लोहा मनवा रहा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अकेले ही यह शहर दुनिया में अपना अलग स्थान रखता है। यहाँ प्रोड्यूस किए जा रहे फाइटर प्लेन्स हों, हेलीकॉप्टर्स हों, राडार्स हों, ड्रोन्स हों या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के इक्विपमेंट हों, ये तमाम चीजें हमारे डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करती हैं। साथियों, आज के समय में भारत एरोस्पेस कंपोनेंट्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम असेंबली का एक ग्लोबली प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बन चुका है। इसमें पब्लिक सेक्टर के साथ साथ हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं।
आज इस एरो शो में 452 इंडियन एग्जीबिटर्स और 57 फॉरेन एग्जीबिटर्स की उपस्थिति है। मैं समझता हूं कि हमारी पार्टनरशिप का यह एग्जीबिशन भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और हमारी बढ़ती हुई ताकत को भी दिखाता है। साथियों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पिछले एरो इंडिया से लेकर अब तक यानी सिर्फ 2 सालों के अंदर विद इन 2 ईयर हमने अनेक अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। कई हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे अस्त्रा मिसाइल, न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, अनमैन्ड सरफेस वेसल, पिनाका गाइडेड रॉकेट जैसे कई इक्विपमेंट भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमने 2 वर्षों में इतनी प्रोग्रेस की है तो आने वाले वर्षों में हम इससे भी कहीं आगे अधिक तेजी से बढ़ेंगे। पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मजबूत कदम उठाए गए हैं उसका शानदार रिजल्ट अब हमें देखने को ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇರುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು.